Hey, so let's discuss on what I mentioned yesterday on my post market. Basically, did not really have a plan. Wanted these levels 17,115 to break or 16,913 to break in spot, which did not happen today. And probably mostly in first half till 2:15, the candles were forming between these two levels. So, what did I do today? Basically, I took a buy trade. Let me just clean this up. Yeah, so basically I took a buy trade. Why? So this is my blue box. If you watch my post market, you know what this blue box is. Low of this blue box is 16940 on future. Yep, 940. The red candle is 940.8. Today's low was 942. So this was the bottom. So how did Nifty open? Nifty opened. So we did see a break yesterday after 2 o'clock, but Nifty opened in this blue box and did not really do anything because there was no plan. As mentioned, I wanted those levels to break, which did not happen, so was waiting. If you check out my system trade, which was basically if 1215 is not making a new low, I will look for a sell below 1215. 1215 was making a new low, and so I did not really want to sell, hence was looking for buying opportunities. So what I did is I bought above 1215 close, stop loss 1215 low, more like a reversal of my system trade, which I usually don't prefer, but I did this because this was still in that buy zone and also closed above 10 MA. So this is my future trade, 1248. Once Nifty broke 6973, which is 1215's high was 72, so it triggered at 73, and I exited at second half. Why did I exit in second half? And why did I exit at those levels? This is where Nifty has been, major resistance in the last 3-4 days, where it has shown some weakness. So 82, I think this is 90. Yep, 90. I exited at 82. So why did I wait? After I got this closing of a candle above VWAP, I brought my stop loss to cost, which was 973 was my trigger. I brought it to 971. So even if this falls, I probably at my cost, right? And looking at the open interest at the end here, it was basically a fight between 17,000 call, 17,000 put. Most of the cases it's sideways, so I didn't really want to. I wanted to see how it goes, and I exited. Got lucky. Didn't really can't really say that I got the top, but I did really catch the bottom. So yeah, because I think at 2:15 also it came around 60, but did not really exit at that time. So yeah, the sad part is this became zero. If you follow my post market, I had taken this 1700 call. I took this once 17,000 broke. I think, yeah, here on 14th. I showed this on my post market videos, and after that it came to 17,200 and it was good greens, but I wanted this level to come, which did not happen, and it became zero. That was sad part, and I had a lot of lots here. Probably should have exited some of this here. Bad call. Anyways, so what am I doing on Friday? Today closing was good. It closed above this 17,112. So what I want to do is I want to see how market, if today's high is broken, I want to see how market behaves in first 1 hour and then look for buying opportunities. If today's high is taken out on Friday, I won't really look for selling opportunities, but I'll also look at how 1 hour closes. So no plans at open, but we'll observe 1 hour candle and see how it goes. Thank you. पहले डिस्कस करते हैं कल का पोस्ट मार्केट में ये बोला था मैंने कि 17,115 और 16,913 अगर टूटता है या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो मैं बाय और सेल देखूंगा. दोनों नहीं हुआ.
इसलिए ना बाय ट्रिगर हुआ ना सेल, और ये एकदम एंड में जाके हुआ। कैसे मैंने आज बैंक निफ्टी में बॉटम पकड़ा वो बताता हूँ। सिंपल था बेसिकली। 12:15 मेरा जो सिस्टम ट्रेड था उसका रिवर्सल किया मैंने। सिस्टम ट्रेड ये था कि 12:15 का जो कैंडल है, अगर आप देखें तो मैंने सोशल चैनल में पोस्ट करता हूँ अपने, 12:15 का कैंडल अगर लो नहीं बना रहा है तो मैं उसके नीचे सेल करूँगा, ये बोला था मैंने। 12:15 का कैंडल लो बना रहा था तो इसके ऊपर मैंने बाई किया। इसका ऊपर क्या है, इसका हाई क्या है 7.2, क्योंकि मैं हाई का नशी करता हूँ। 972, ट्रिगर है 973 और स्टॉप लॉस था डे लो, और मैंने एग्ज़िट किया एकदम एंड में 082। लक्की था मैं। एक बार 60 आया था, फिर वापस चला गया था 17,000 पर। वहाँ पर जब ये यहाँ पर आया था तब बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट आ गया था 17,000 पुट में, और कॉल और पुट में झगड़ा हो रहा था उस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो रख के देखते हैं, क्योंकि मैं कॉस्ट पे ले आया था इसको। जब ये क्रॉस हुआ था ये कैंडल का स्टॉप लॉस कर दिया था मैंने, जो कि 971 है, जिसने वी वैप क्रॉस किया। और तो लॉस तो होता नहीं मुझे, और लास्ट में ये मूव आया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बेसिकली। मैंने टॉप नहीं पकड़ा लेकिन बॉटम ज़रूर पकड़ा। दूसरा लॉजिक ये है इसका, निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये ब्लू बॉक्स के अंदर ओपन हुई है। कल इसने तोड़ा था लेकिन ये वापस इस बॉक्स के अंदर आ गई। अगर आप मेरे पोस्ट मार्केट देखते हैं तो आपको पता है ये बॉक्सेस क्या हैं। तो ये बॉक्स के अंदर आ गई, तो इस बॉक्स का लो है 940.8। आज हमारा लो है 942, और ये जो 942 बना है ये 12:15 के कैंडल ने बनाया है, जो कि मेरा सिस्टम ट्रेड में मैंने बोला था कि नहीं बनाना चाहिए, तो ये मैं शॉर्ट करूँगा। तो इसके ऊपर इसलिए मैंने बाई किया क्योंकि अभी भी ये ब्लू बॉक्स के अंदर है, और इसके ऊपर का जो वैल्यू है जब मैंने बाई किया ये ऑलमोस्ट 20 EMA के ऊपर क्लोज हो जाता है 3 मिनट में। तो ये लॉजिक था बॉटम का, टॉप का कोई लॉजिक नहीं था। ये तो था कि एग्ज़िट यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस था। ये तो मैंने शायद कल भी बताया था, कल या परसों भी बताया था जब यहाँ से गिरा था। ये 3 दिन से यहाँ पर ये काफ़ी वीकनेस है यहाँ पे। तो ये तो मुझे पता था कि अगर यहाँ आता है तो फिर मैं एग्ज़िट करना ही चाहिए, पर ये नहीं पता था कि यहाँ आएगा। तो क्योंकि मैंने ट्रेल कर लिया था कॉस्ट पे, तो और ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें तो काफ़ी फाइट था 17,000 कॉल पुट में, तो किसी को तो गिव अप करना ही था। तो ये था लॉजिक। अब आते हैं फ्राइडे का क्या प्लान है। ओपन तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, पर मैं क्या, क्योंकि एंड में इसने ये वाला हाई तोड़ दिया है, तो मैं आज के हाई का टूटने का वेट करूँगा। आज का हाई जब टूट जाता है उसके बाद मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूँगा। अगर 1 घंटे की क्लोजिंग के बाद, मतलब 10-15 के बाद मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देखूँगा। अगर कुछ मिला तो अच्छे आर से, नहीं तो मैं ओपन पे कुछ नहीं करने वाला। थैंक यू।